Hello student, today we will continue exercise 4.2, remaining part of question number 1. Chapter 4, practical geometry, quadrilateral, gold, in which OL 7.5, GD 6 centimeter, LD 5 centimeter. These are the sides of quadrilateral. GL, OD, these are the diagonals. Here we apply rule number 2, in which 3 sides and 2 diagonals are given. We draw its rough sketch. Name of this GOLD. OL 7.5, GL 6, GD 6, LD 5, OD 10. Which side is not given? GO. जो साइड आपको गिवन नहीं होती है हमें उसके अपोजिट साइड को ड्रॉ करना होता है, दैट इज DL. टेक स्केल and pen or pencil. First we make LD. LD 5 सेंटीमीटर. हम डॉट लगाएंगे. डॉट लगाने से क्वेश्चन में फिगर में नीटनेस आती है. LD फिगर हमें क्लियर दिखाई देता है. L के ऊपर क्या है? O. रफली लिखेंगे. D के ऊपर क्या है? G. GOLD. LO हाउ मच सेंटीमीटर? 7.5. Okay. OD 10. With D as center, OD जो OL रे है थोड़ा सा छोटा रह गया, हम इसको और एक्सटेंड करेंगे. आफ्टर ओपन इट 7.5 dot point O. OL join O to D. Join dimensions. Now DG. DG is 6. Open 6 centimeter. LG also 6 centimeter. Dot G. Join
Now after join O to G are required quadrilateral. Dimensions. This is the required quadrilateral which I need. Step of construction same as question number 1 part 1 in the previous video we had learned. हम लर्न कर चुके हैं. Now the next is part 3rd. Rhombus. Name of this band BE and D, in which BN and DE given. Both are diagonals. It's a special type of quadrilateral. We know that. क्या जानते हैं आप rhombus के बारे में? Diagonals are not equal, bisect each other at 90 degree and its adjacent sides are equal. Write down here. Diagonals bisect each other at 90 degree and all adjacent sides are equal. For it, first we make a line of 6.5 centimeter. ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन. Join DE. Perpendicular bisector we will draw. Perpendicular bisector के लिए more than half compass खोलेंगे. एक आर्क आपने ऊपर की तरफ लगाया और सेम रेडियस पे दूसरा आर्क आपने नीचे की तरफ लगाया. फ्रॉम पॉइंट डी दोनों ही आर्क को आपने कट करना है. नाउ जॉइन we are using here dotted line. This one angle is of 90 degree. Diagonal bisect टू इक्वल पार्ट में कट करना. BN 5.6 है आपके पास. हाफ ऑफ 5.6 2.8. तो आप 2.8 नीचे की तरफ आर्क लगाएंगे और 2.8 ही आप ऊपर की तरफ आर्क लगाएंगे. 2.8 with this as center. Let it be point O. Name of this is band BEND. Join B to D, D to N, B to E, E to N. These all sides are equal. Now I am writing here its step of construction. Draw a line segment DE equals to 6.5 centimeter. Next one, point second, draw its perpendicular bisector which intersect at O.
with O as center. OB equals to ON 2.8 centimeter as radius. Draw two arcs on perpendicular line upward and downward. Join B to D, D to N, N to E, E to B. Hence, BEND bend is required rhombus. Easy? Thank you.